हेलो एस्पिरेंट्स। आमे आज कोड स्टार्ट करबा। लास्ट जो दीटा सेशन हमें 2021 2022 2020 रो ओपीएससी पीआईक्यू हमें डिस्कशन कर दीजे पॉलिटी सेक्शन। आज हमें कौन करबा 2023 जो लास्ट डिसेंबर प्रीलिम हेतला 2023 सीएस प्रीलिम पॉलिटी सेक्शन रो एमसीक्यू गुडा करबा। आज हम आउट जिनस करबा जे जो टॉपिक बारंबार हमें जितकी हमें कलेनी 2021 2022 रो जो टॉपिक बारंबार रिपीट होची आ 23 रे भी सेम जिनस रिपीट हेकी ताकू भी हमें कोन करबा ना ताको पॉइंट करबा उठे पेजेस रे सो दैट हमें जानि परिबा जो नेक्स्ट जो प्रीलिम आछी कोन कोन सब टॉपिक इंपोर्टेंट रहबो से अनुसार हमें पढियो पडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन 53 रो दूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉट करेक्ट देखो नॉट करेक्ट in respect of the schedules and subjects in the Indian constitution देखो schedules उपरे अग्र क्वेश्चन आछि दी 3 वर्ष होला कंटीन्यूअस पचार चलछि हमें एठी गोटे पॉइंट कर दबा जे कोन आछि schedules उपरे कोन हैछि ना क्वेश्चन आछि ठीक अछि। तो ए टॉपिक को हमको कवर करिया पडियो। तो देखि दबा एतर ऑप्शन कोन अछि ना शेड्यूल 2 देछि emoluments of comptroller and auditor general of India। Schedule 3 रखिछि allocation of seat in council of state, administration control of schedule areas, first amendment of Indian constitution। तो ओपीएससी रो आंसर के थिला बी हला। तो 2 और 3 मैच करू जो एटा कोन हो 4 allocation of seat in राज्य सभा और council of state ला schedule 4 रे आसे amendment of control of schedule रे schedule 5 रा कोन हला 5। तो ए सब जिंस हमें देखि दबा भल रे कि हमर कोन होछि ना 12टा शेड्यूल अछि। फर्स्ट शेड्यूल होला लिस्ट एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एटा होला फर्स्ट शेड्यूल। 2 नंबर टा कोन ना emoluments allowance privilege of high ranking officials। थर्ड शेड्यूल होला standardized form of oath and affirmation। फोर्थ शेड्यूल रे आछि allocation of seats in the राज्य सभा। फिफ्थ शेड्यूल रे कोन आछि सिक्स शेड्यूल रे कोन आछि तो एमिति करि के हमर कोन होछि ना टोटल 12टा शेड्यूल हमको बारंबार पढियो पडिबो कारण लास्ट जते प्रीलिम क्वेश्चन हेछि शेड्यूल ऊपर से निश्चित भाबे क्वेश्चन पछाछि बुझियला। हमर इंपोर्टेंट टॉपिक अनुसार कोन देखिबा ना पॉलिटी रो शेड्यूल टा हम देखिबा तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि which of the following statements are correct in respect of the electoral college in to elect the president of India ठीक अछि। तो प्रेसिडेंट रो इलेक्शन ऊपर गोटे क्वेश्चन आछे आ एटा बहुत इंपोर्टेंट हुए जेतला हम प्रेसिडेंट चैप्टर टा पढुजे जेतला हमें प्रेसिडेंट रो चैप्टर टा पढुजे प्रेसिडेंट रो इलेक्शन टा हम पढबा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट रो केमिति इलेक्शन हुए सेटा हम पढिबा आ गोटे जिंस से पचारे द पावर ऑफ प्रेसिडेंट मेनली द veto powers veto veto powers टा हमको पढ़िବାକୁ पड़िबो ठीक अछि। तब देखि दवा क्वेश्चन कोन अछि ना consider the following statement in respect of the electoral college in India to elect the president of India। It consists of elected member of Legislative Assembly of National Capital Territory Delhi and Union Territory of Pondicherry were added to the electoral college by 17th constitutional amendment। देखो मीन जे इलेक्शन प्रेसिडेंट रो इलेक्शन रे समस्त भाग ने किंतु कोन नॉमिनेटेड बाय जो 12 जन नॉमिनेटेड होंदी राज्यसभा को प्रेसिडेंट को द्वारा से माने भाग नेबेनी आ कोन करिवे स्टेट रो काउंसिल टा भाग नेबेनी सो इलेक्टेड मेंबर भाग नेबे लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट एटा हमें क्लियर हिज एटा क्लियर होला पर हम क्वेश्चन सॉल्व करबे किंतु टॉपिक अछि जे क्वेश्चन अछि जे 17th constitutional amendment रहितला कि यस रहितला। It consists elected member of Legislative Assembly of NCD Delhi Union Territory of Pondicherry that were added in 17th constitutional amendment एटा है गला ठीक। तापरे the number and values of votes are based on the population of 1971 census correct।
1971 सेंसस अनुसार ହେଇଛି। 84th constitutional amendment fixed the values of vote based on the current population census 2011 এটা wrong ଅଛି। The entry of MLAs of NCT of Delhi and Union Territory of Pondicherry came with effect June 1 1993 এটা no এটা ভুল ডাটা ଅଛି। এটা কোন ହେଇଛି this statement is the entry of MLAs of NCT of Delhi and Union Territory of Pondicherry came with effect June 1 1993 this statement is correct। This the inclusion of these MLAs in the electoral college to people from the state ହେଲା। ତ କଣ ବାଛିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଏଠି ସେ କହିଥିଲା କରେକ୍ଟ ନା ଇନକରେକ୍ଟ ସରି ତ ଆମକୁ ତ କରେକ୍ଟ ବାଛିବାର ଅଛି। ଆନ୍ସର ରେ 4 ଅପସନ ଠିକ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା OPSC ଆନ୍ସର ସେ ଦେଇଛି 1 and 2 ଏଇଥର କିଛି ଗଡବଡ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରେ ଏଇଟା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏଥିରେ ଇନକରେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ 2011 ଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ incorrect କହୁଛି the claim that 24th constitutional amendment fixing value based on 2011 census is incorrect ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଅପସନ ତ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଠିକ ଅଛି 1 and 2 ଅପସନ ଠିକ ଅଛି still ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିଦବା ଠିକ ଅଛି क्वेश्चन को ଟିକେ ଆମେ ମାର୍କ କରିକି ରଖିବା କାରଣ यार ଅପସନ ଗୁଡାକ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କୁ ଯିବା। Question is which of the following statements are correct in respect of the genesis of the doctrine of basic structure of the constitution। तो doctrine of basic structure of the constitution ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଦବା କଣ ଦେଇଛି ଆମର ଅପସନ ଗୁଡାକ ସବୁ କେସ୍ ଲ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି। The doctrine was first proposed by Supreme Court in Shankari Prasad case। जे शंकरी प्रसाद केस रे बेसिक स्ट्रक्चर उपरे क्वेश्चन ए शंकरी प्रसाद केस उपरे फास्ट प्रोपाउंड करा ହେଇଥିଲା सुप्रीम कोर्ट रे। तापर देखिए ऑप्शन 1 इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन এটা ঠিক ଅଛି। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट ruled that article 368 only lays down the procedure to amend the constitution process to amend the constitution but does not give an absolute power to parliament to amend any part of the constitution এটা ବି ଠିକ ଅଛି। In the case of Women Rao versus Union of India, Supreme Court set aside the basic structure of the constitution। এটা অপশন কোন আছে না 2 and 3 এটা হচ্ছে কেস ল উপরে কোশ্চেন আসছে কেস লস কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচার উপরে কোন ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ହେଲା। ତ 3 ନମ୍ବର ଟପିକ ଦେଖିଦବା ଆମେ ନା ବେସିକ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋନ ଏଥିରେ ନା କେସ୍ ଲ ଗୁଡାକ କେସ୍ ଲଜ इवोल्यूशन वा इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर केमती आसिला तार इवोल्यूशन टा हमको देखिया पड़े इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ए जिनसटा को देखियो को ठीक अछि तापर देखि दबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन जो दे फुल ता नहीं 56 which four articles of Indian constitutions added to the Indian constitution by 42nd constitutional amendment 1976 को आर्टिकल ऐड कर दिया 39 ए ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିପିଏସପି ରୁ ପ୍ରାୟ क्वेश्चन ଆସିଛି ହେଲା ତ 39 ए ତ ଆମେ ଏଟା ପୁରା ଦେଖିଦବା ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ଆମେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ସହିତ ଦେଖିଦବା ଯେ ଦ 42nd constitutional amendment act the 42nd constitutional amendment act of 1976 added the following articles of Indian constitution 49 ରେ ଦେଖ ଏଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ आर्टिकल 39 ए डीपीएसपी ରୁ add करा ଯାଇଛି to promote equal justice and provide free legal aid
43A to secure participation of workers in the management of industries. 48A protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife. এটা add করা হয়েছে 323 323A dealing with the tribunals for administrative matter और 323B dealing with the tribunal for other matter. ଏତିକି ଜିନିଷ add କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଢିବା ଆମକୁ କୋଉ ଟପିକ ଏଇଟାରେ କଭର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ କଭର କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଟପିକ କରିବା amendment constitution ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଆସୁଛି ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଆଡ ହେଇଛି ହେଲା ତ आंसर से अनुसार बी होची कौन कौन ऐड है एटा मु पूरा डिटेल कहती जे 39A प्रमोट इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड 43A जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 48A protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife 23A dealing with the tribunals for administrative matters 323B dealing with tribunals for other matters तो ए सब जिन कौन है ना आड करा देख पुणी 57 क्वेश्चन जीवा आम 57 क्वेश्चन पचार पुणी लिस्ट पचार 7 शेड्यूल क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट पचार इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोटा न तो देयर आर 100 सब्जेक्ट इन द लिस्ट यूनियन लिस्ट करेक्ट अछि एटा हला करेक्ट हमको किंतु नॉट करेक्ट बाछियार अछि this list signifies cooperative federalism hela there are 15 subjects in the union list on which parliament has an exclusive power to levy taxes the supreme court has no jurisdiction over the matters in union list এটা ঠিক নহ এটা দেয়া আছে आंसर কোন 2 and 4 4 and now 2 হলা তো এটা ঠিক নহ তাহলে এটা ঠিক কোন আমি দেখিবা there are 100 subjects in the union list union list does not signify cooperative federalism instead it signifies centralized power এটা cooperative federalism no the parliament has exclusive power এটা centralized power show করছে সে তারপরে ঠিকঠাক মতো সুপ্রিম কোর্ট does have jurisdiction over matters in the union list সুপ্রিম কোর্ট jurisdiction আছে কিন্তু সে মনা করে ଦେଇଥିଲା ହେଲା ତ आंसर ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଛେ आंसर आंसर ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିଛେ ନା D ବୁଝିହେଲା କଣ ଯେ ଲିଷ୍ଟ ରେ କୋऑपरेटिव फेडरलिज्म नै कोन अछि गोटे पावर जो यूनियन ऑफ स्टेट रो पावर ऊपर डिस्कस हेची आ सुप्रीम कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन अछि ना सेंट्रलाइज्ड पावर ऊपर एक रहै देखो पुनी थरे से यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट ऊपर क्वेश्चन आस्तला हमें एटा लिखि दबा एटा भी पुनी होची शेड्यूल रो 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट ए सब विषय रे हमें नेक्स्ट एटा को पढियो पड़ियो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टा हमर कोन थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया देखो पूरा इजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कोइ हम पढियो पड़िबो ता हमर 2 नंबर टॉपिक जतला हम डिस्कशन करथला हम लिखिथिले कॉन्स्टिट्यूशनल तो कोडा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोडा को कोडा ट्रिब्यूनल्स ट्रिब्यूनल्स कोन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हला तो ट्रिब्यूनल्स हला हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो एक जोटी अछि हम काटि दबा जदी गोटे कटि गला ताबरे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो जो 2 नहीं सेटो काटि दिले कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया ये हला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो 2 3 हला आंसर हला लॉ कमिशन ए सब जिंस कोन हला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये हला कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल ऑडिटर जनरल हला कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है तो आंसर हला भी बहुत इजी क्वेश्चन तो जदि खाली कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने के जोटा आर्टिकल रे मेंशन होई दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन होई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रे जोटा मेंशन हैनी दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक अछि तो
नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 59 इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऊपर क्वेश्चन आछे कोन ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ईसीआई कमिशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन आछे which of the following statements are correct in respect of the election of commission of india election commission of india ऊपर को नहीं के ये कौन नेक्स्ट टाइम देखिए दो 327 gives power to parliament to make provision with respect to election to legislature which is a wrong statement. Besides chief election commission, two additional commissioners were appointed for the first time in January 1, 1990. ठीक अच्छे the election commission amendment act 1990 made the election commission a multi member body এটা भी ठीक अच्छे प्रथम single member body था तब multi member body करा हला the decision in election commission by the members are made by anonymous vote এটা भी ठीक है तो ଦେଖିଦବା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ର ଆର୍ଟିକଲ ହଉଛି 324 324 ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ବଡି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଥାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଅଦର ଟୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଥାନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ତାପରେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ପାଇଁ ହବ डिस्प्यूट ताकू सॉल्व करिबा तो एमती हमें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जेतले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढिबा तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सेटा पढिबा भल रे ध्यान देकी पढिबो ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कोन होचे ना क्वेश्चन हला यार वोटिंग एज 21 केबे हला तो जिनसटा भी देखिए हला द इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऊपर क्वेश्चन आछला impeachment এটা হলা repeated topic হলা এটা repeat ହେଇଛି the impeachment of Indian president in parliament is a quasi judicial procedure correct ଏଇ question ଦେଖ impeachment कोण ପାଇଁ ହୁଏ ଏଟା Indian president ର impeachment କେବଳ ହୁଏ କଣ violation of the constitution violation of impeachment Indian president କାହାରି ଆଜି ଯାଏ ହେଇ ନାହିଁ ହେଲା ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଏଇ question ଥିଲା 60 तापर जो तापर क्वेश्चन which of the following are not correct in respect of the advocate general in India advocate general हमारा constitutional body जने ହେଲା पर कह देथिले हमर न्यू advocate general के अछंते ना श्री पीताम्बर आचार्य तो या भीतर कोटा not correct हमको बचवार अछि the advocate general is the highest law officer of the state এটা तो correct हे गला he is appointed by the governor on the advice of the chief justice of high court देखिबा कि appoint करंती he should be eligible to be appointed as a judge of the high court এটা भी correct he should not be more than 65 years of age हैला हमें एडवोकेट जनरल भितरे सर टिके डिस्कशन करथला हम जानिबा then sir कोन होची ना 2 और 4 टा हमर इनकरेक्ट the advocate general is in the highest law officer এটা correct however he is appointed by the governor on the advice of the chief minister and not the chief justice of the high court chief minister तंको एडवाइस करिवे high court justice करिवे he should be eligible to be appointed as the judge of the high court so this statement is also correct avala there is no age limit 65 age limit of 65 years for the advocate general so this statement is incorrect advocate general हमें कौनसी एज लिमिट नहीं एज लिमिट बुझिहला ना बुझिहलानी इजी क्वेश्चन थिला डायरेक्ट जोने बहिरो पढे साइंस कर परिबे तापर प्राइवेट मेंबर बिल विषय क्वेश्चन अछि which of the following statements are not correct in respect of the private member bill introduced in parliament a private member is any member of parliament कौन बाछार अछि हमको correct and not correct other than the minister other than the member of treasury bench hela the bill of this nature are introduced and debated only on Mondays. The introduction in the house requires 1 month notice. It is correct. Private member bill may 1 month notice dorkar हुए. Constitution amendment bill may be introduced either in the Lok Sabha or Rajya Sabha. It is देख हमें दीटा जिनस जानते चारटा करेक्ट गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें जतबेले पढिबा लिखि भी देछि से टॉपिक टा कवर करिया पडिबा
तो सेटा कोनोसी भी हाउस रे इंट्रोड्यूस हे परिबो तो 4 नंबर टा हेगला करेक्ट हमको इनकरेक्ट बाछियार अछि तो 4 टा को मैं डिलीट कर देली तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस रिक्वेस्ट 1 मंथ नोटिस एटा भी करेक्ट 3 टा को भी मु रिमूव आंसर के बंचिला बुझियला ना नहीं ठीक अछि ता नेक्स्ट तो पार्लियामेंट चैप्टर रू भी कोन होचे ना बारंबार क्वेश्चन रिपीट होचे हमें जतबेले रिवाइज करिबा हम कोन करिबा पार्लियामेंट चैप्टर टा भी सब बेले रिपीट हो 63 which of the following statement correct भाषा रची in respect of the anti defection law ला केते सीट 10 पुणी से शेड्यूल रो क्वेश्चन रिपीट हेची देखिबा anti defection law found places in the constitutional amendment act 52nd constitutional amendment act ठीक है 1985 right statement the 10th schedule of Indian constitution was inserted in the constitution in the year 1989 1985 this anti-defection law was reinforced in the year 2002 okay ठीक अच्छी if any member who is independently elected joins any political party he is not disqualified ना से disqualified होंगी तो anti-defection law कौन ना 52nd constitutional amendment act 1985 रे अमेंड करा हैतिला 1989 रे इंसर्ट करा हैतिला तापरे कोन पचारछि तापरे जे एनी मेंबर जदि इंडिपेंडेंटली एंट्री करिवे elected join as any political party. This statement is incorrect. Any member who is independently elected joins any political party, he is not disqualified. Disqualified तो पूरी शेड्यूल रो क्वेश्चन रिपीट हेचा डिफेक्शन लॉ इजी क्वेश्चन नेक्स्ट जीबी which of the following statements are correct in respect of the special session in parliament parliament special session upre question kora heche puni parliament topic repeat the term special session of parliament is defined under article 85 of the Indian constitution article 352 subsection 8 subsection b of Indian constitution speaks about special sitting of the house of parliament the proceedings of both the house of parliament in special session would be limited ठीक अछि if proclamation of emergency is issued when the parliament is not in session then one third of the Lok Sabha and one third of Rajya Sabha members can ask the president to convene a special session of parliament तो जो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट अछि ता विषय हम टिके देखि दबा जे कोन एक्जेक्टली जिनसला जे स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट को कोन कर हैछि ना आर्टिकल 85 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर हैछि आर्टिकल 85 deals with the summoning and prorogation of parliament but does not specifically mention special session हला तो जो आर्टिकल 85 रे से कहू जे स्पेशल सेशन रे मेंशन करा जाइछि किंतु डिफाइन करा जायनी 85 रे एटली कहले द टर्म स्पेशल सेशन इज नॉट डिफाइंड इन इट आर्टिकल 85 एटा कोन करा हैछि जे आर्टिकल 85 रे डील करा होछि समन करबा एंड प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट बट डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द स्पेशल सेशन बुझला तो आर्टिकल 3 the 352 352 subsection 8 subsection b of the Indian constitution that speaks about a special sitting of the house of parliament the proceeding of both the house of parliament are usually limited to specific proposal during a special session that this session are called upon the by government to commemorate national or parliamentary milestone to discuss and approve specific issues
ସେଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଥର ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କଥା ହଉଛି ଯେ 85 ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ସେ ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରୋରୋଗେସନ ସମନ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ବୋଲି କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ which of the following statements are correct in respect to the due process law and procedure established law? এই কোশ্চিনটা ডাইরেক্ট রিপিট ହେଇଛି, এটা ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମର ଆସିଯିବ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ ଆଉ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବାय ଲ। The due process of law focuses on the formal adherence to legal procedure set by the government. A procedure established by law emphasizes the protection of individual rights and fairness in the application of law and legal proceedings. ठीक है, चेंज कर दिए स्टेटमेंट एग्जैक्टली ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर बोथ आर इनकरेक्ट हम कारण दीटा जो डेफिनेशन टा है चेंज कर दिए कारण ड्यू प्रोसेस लॉ फोकस ऑन द फॉर्मल अधेरेंस है लीगल प्रोसेसिंग है এই যে জিনিসটা হচ্ছে এটা দুইটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি কোন করেছি ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा कोन करছে एम्फसाइज करছে फेयरनेस एंड जस्टिस इन लीगल प्रोसीडिंग जोटा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैला इट एंश्योर करे जे लॉ आर नॉट ओनली followed but are also just and reasonable condition right reasonable it goes beyond and more procedure adherence to include substantive right तो जहाँ भी से स्टेटमेंट दे तब चेंज कर दे हैला तो एटा कोन करना फेयरनेस और जस्टिस चेक करे इन गुटे लीगल प्रोसीडिंग बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कोन करे ना जोटा को इंडिया रे फॉलो करा जाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ it emphasizes the protection of individual rights and fairness in the application of law it not the procedure established by law means that a law is valid if it is enacted followed the correct procedure regardless of whether it is fair or just ଗୋଟେ correct procedure follow କରୁଥିବ whether it is ମାନେ fair हो just condition whether it is fair or just but it should follow a fair procedure it doesn't inherently protect individual right in the same way the due process of law तो जहाँ भी स्टेटमेंट दिया जाता ताको चेंज कर देता ड्यू प्रोसेसर एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सो बोथ द स्टेटमेंट्स वर कोन थिला नॉट करेक्ट थिला बुझे होची एटा होची फंडामेंटल राइट रो कोन होची हला तो आमे जेतले पढिबा ए जो 10टा ये लिखिली टॉपिक लिखली को भी हमको कोन करबा छै ना कवर करबा ठीक अछि ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଓପିଏସ୍ସି ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ କିମ୍ବା ଓପିଏସ୍ସି ଷ୍ଟଡିର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରିକି ଆପଣ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।